अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं SchoolSir.com का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 35 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड लेके हैं। इसमें जो जो कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं उसके बारे में बताएंगे और इनकी प्राइस अपडेट भी आगे चल के वीडियो में दिखाएंगे आपको। और साथ जो है इसका बेंचमार्क भी किया है हमने PUBG पे और जो है GTA 5 पे, वो भी आपको चल के आगे दिखाएंगे। आप बेंचमार्क भी इसका देखिएगा। और ये स्पेशली सिस्टम जो है वो मिड रेंज से जो नीचे रेंज होती है, जैसे ये कह लेंगे इनिशियल लेवल की जो स्टेज होती है, उस लेवल से आप गेमिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका बजट कम है तो आप जो है वो इस बजट को भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। इस बिल्ड को जो है वो अपने बजट में कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो कंपोनेंट जो यूज़ किए हैं उनकी प्राइस बड़ी अच्छी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और ये स्पेशली जो है वो GTA 5, PUBG, Tekken 7 जो है फोर्टनाइट, इस तरह की गेम्स जो आप लोग खेलते हैं उसके लिए ये स्पेशली सिस्टम हमने बनाया। तो इसमें जो जो कंपोनेंट यूज़ किए उसके बारे में बताता चलूँ आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलते हैं जी आज की 35 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की तरफ। इसमें ऑलरेडी मैंने बड़ा अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ है और ये बिल्ड जो है वो 35,500 में बनी है, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो इसको राउंड फिगर में कर दिया, 35,000 में कर दिया। अच्छा, इसमें जो है वो आपको डिलीवरी कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ती, वो भी हमारी तरफ से आपको डिस्काउंट होता है, वो भी एक्सपेंस तकरीबन 2000 तक होते हैं। तो इस तरह ये अगर आप डिलीवरी कॉस्ट पे करें तो ये बिल्ड जो है वो आपको जो है वो 33,000 तक पड़ती है। लेकिन ये 35K में हम विद डिलीवरी आपको देंगे, लेकिन इसमें हमने डिलीवरी कॉस्ट ऐड नहीं की, जस्ट कंपोनेंट की प्राइस ऐड की है। वो हमारी तरफ से आप लोगों को फेवर होती है डिलीवरी जो कॉस्ट होती है। अच्छा, अभी चलते हैं जी इसके कंपोनेंट की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। जो इस बिल्ड के साथ हमने प्रोसेसर यूज़ किया है वो हमने i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। 3470 प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। और इसी तरह इसके साथ हमने H61 मदरबोर्ड इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। 2 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड होता है और ये i7 थर्ड जनरेशन तक जो है वो अपग्रेडेबल है। इस तरह इस पर 4 हार्ड ड्राइव लगने की ऑप्शन है और 8 GB तक का ग्राफिक कार्ड जो है वो आप इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। इस तरह 2 रैम स्लॉट है तो 8 GB की 2 स्टिक भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर, लेकिन हमने 4 GB की 2 स्टिक लगाई हैं। टोटल 8 GB रैम हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है, 1600 MHz वाली। और इसी तरह इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपको हर बिल्ड में हमारी जो है वो SSD नज़र आती होगी, लेकिन इस बिल्ड के साथ हमने SSD यूज़ नहीं की क्योंकि हमने इसको 35 के बजट में जो है वो मैनेज करना था। अगर आप इसमें SSD लगवाना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो उसकी कॉस्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो 3000 की होती है। अगर वो ऐड करेंगे तो ये बिल्ड 38K तक चली जाएगी। बाकी ये सारी चीज़ें कन्वर्टेबल है, गेमिंग केस भी लगवाना चाहें तो वो भी लग जाएगा, लेकिन हमने इसके साथ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल केस इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है, ब्रांडेड केस। और इसी तरह इसके साथ हमने 400 वाट की जो है वो PSU इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। अभी नेक्स्ट चलते हैं जी इसके ग्राफिक कार्ड की तरफ। जो इस बिल्ड के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो हमने R7 260X ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। 2 GB DDR5 में 128 बिट ग्राफिक कार्ड हमने जो है वो इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी 35 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन। अभी इनकी प्राइस अपडेट भी आपको देते चलूँ तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे प्रोसेसर की। जो इस बिल्ड के साथ हमने यूज़ किया है i5 थर्ड जनरेशन, उसकी जो प्राइस हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है वो 4500 हमने ऐड की है। और इसी तरह इसके साथ जो मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है H61 मदरबोर्ड हमने 2 रैम स्लॉट वाला यूज़ किया है, तो उसकी जो प्राइस हमने ऐड की है वो 4500 है। प्रोसेसर और बोर्ड दोनों यानी कि हमने 4500 में ऐड किए हैं। रैम की बात करें तो जो इस बिल्ड के साथ हमने रैम यूज़ की है 4 GB की 2 स्टिक हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। टोटल 8 GB रैम हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है 3000 में। और इसी तरह इसके साथ हमने जो HDD यूज़ की है 500 GB की HDD हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है, 100% हेल्थ और 7200 RPM वाली। और इस बिल्ड जो HDD की जो प्राइस हमने ऐड की है वो 2000 इस बिल्ड के साथ जो है वो ऐड की है। अभी बात करेंगे इसकी PSU की। जो इस बिल्ड के साथ हमने 400 वाट की PSU यूज़ की है, जिस पे आपका ये ग्राफिक कार्ड चल सकता है। 1063 GB तक का ग्राफिक कार्ड आप इस पर जो है वो ईजिली चला सकते हैं इस PSU पे। इसमें 6 पिन कनेक्टर भी है। इस PSU की जो हमने प्राइस ऐड की है वो 3500 हमने इस बिल्ड के साथ जो वो ऐड की है। लास्ट अब बात करेंगे इसके जो है वो केस की। तो इस बिल्ड के साथ जो हमने ब्रांडेड केस यूज़ किया बिल्कुल नॉर्मल केस, वो हमने 2000 में ऐड किया है। अगर आप गेमिंग केस लगवाना चाहते हैं तो उसकी भी हमारे पास रेंज 11,000 से 25,000 तक की रेंज तक पड़े हुए हैं, अब वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी लास्ट पे बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है R7 260X 2 GB 128 बिट GDDR5 में ग्राफिक कार्ड डुअल फैन में हमने यूज़ किया है। तो इसकी जो प्राइस हमने इस बिल्ड के साथ ऐड की है 16,000 यानी कि 16K में हमने इस बिल्ड के साथ जो वो यूज़ किया है।
इस तरह अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 35,500 प्राइस बनती है, लेकिन हम 35,000 में आपको ये बिल्ड बना के दे रहे हैं। बड़ा अच्छा बजट है। अगर आपका कम बजट है, आप गेमिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप 35,000 वाले पीसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वीडियो के लास्ट पे आप जो है इसकी बेंचमार्किंग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ इसकी वारंटी के बारे में। तो इसकी वारंटी आपको 15 दिन की मिलेगी, जिसमें डेड और पन के अलावा तमाम आर्टिफैक्ट्स की जो है वो 15 दिन की वारंटी आपको मिलेगी। शिपिंग जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की किसी भी कोने, किसी भी जगह, किसी भी सिटी में, किसी भी गाँव में आप जो है इसकी शिपमेंट मंगवा सकते हैं। तो इसकी शिपिंग कॉस्ट आपने पे नहीं करनी है, आपने जस्ट 35,000 ही पे करना है। तो उसमें कुछ रकम जो है वो एडवांस की सूरत में पे करनी होती है, बाकी कैश ऑन डिलीवरी होता है। तो ये अगर आप बिल्ड बाय करना चाहते हैं या इसके अलावा कोई भी किसी भी बजट में बिल्ड बाय करना चाहते हो, तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, अब वहाँ पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप हमारा स्टोर विज़िट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमारे स्टोर पे भी आके जो है वो बाय कर सकते हैं। तो आप इंजॉय करें जो इसका बेंचमार्क है, और मुझे नहीं इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़। Hey, darling, I ain't seen you in forever. Yeah, I want to return this piece of shit. Help! 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 Please recall me. Please recall me.
Please recall me. I'm recalling a teammate. Thanks. I got supplies. Marked a location. Watch out! Watch out! Let's go! Help!
Thank you. We are number 1.